Good evening to all of you. Is this audible? Visible to all? Is this audible? Visible? What a second. Yes. Now I can see your comments. Yes. All clear? Okay. So last class ର topic of discussion कौन थिला हमरो? Poverty unemployment ऊपर हम discuss करथले ना last time. All right. So आजिर topic of discussion अछि on agriculture. Agriculture again another important topic for OCS examination. तो आसिबा हम important question को आसिबा directly. ना समस्तंकर मने थिबो just to remind you agriculture को sector रे आसुथिला. Agriculture ये को sector आसुथिला, this is the primary sector. नहीं की? ना ये sector relevance कौन थिला? By to ई agriculture topic जेतबेले पढुचंदी केतरा important point कहि दोची मन रखंतु. आकु geography agriculture खाली नुहे agriculture एवं industry. Agriculture और industry ये दीटा जाक टॉपिक को आपण geography और economics सहित मिसई की पढन प्रथम कथा. एवं एग्रीकल्चर रे इंपोर्टेंट टॉपिक किए एग्रीकल्चर रे इंपोर्टेंट टॉपिक किए कोड क्वेश्चन आसे कहि दोची कि यार कंट्रीब्यूशन कोन प्रीलिम्स कथा कहूँ को पॉइंट को फोकस करियो कंट्रीब्यूशन कोन टू जीडीपी ना एमएसपी रो एटी क्वेश्चन आसीबो एफआरपी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस क्वेश्चन आसीबो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रो क्वेश्चन आसीबो देन आसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन एटा ज्योग्राफी पार्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन एटू क्वेश्चन आसीबो हैना देन आउ गुड क्वेश्चन आसीबो एग्रो क्लाइमेटिक जोन परे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन आसीबो सो ये सब स्क्रीन ब्लर होची जस्ट अ सेकंड अमित ना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो एबे हबोनी नाउ फिक्स्ड ओके ये हला इंपोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन आसे साधारणतः एग्रीकल्चर टॉपिक सीएससीपी एमएसपी सहित सीएससीपी रो रोल कोन रोल ऑफ सीएससीपी ओके चलो ताले क्वेश्चन को आसीबा तो ताले कोन कहली एग्रीकल्चर टॉपिक जेतोले पढिबे इकोनॉमिक्स सहित आको मिसई की पढिबे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दीटा जाक मिसई की पढिबे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भीतर फरक कोन कि ज्योग्राफी रे हमें देखुचे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर एगुडा को देखुचे कौन कहली ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर देन इकोनॉमिक्स रे कौन देखुचे इकोनॉमिक्स रे कौन देखुचे ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखुचे कौन देखुचे इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखुचे इकोनॉमिक एस्पेक्ट मींस सिग्निफिकेंस कौन कहली इकोनॉमिक एस्पेक्ट रे हम देखुचे सिग्निफिकेंस है ना ताले एतिक हला इंपोर्टेंट पार्ट मन रखिबे क्वेश्चन को आसीबा मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऊपर अछि एमएसपी इज रेकमेंडेड बाय सीएससीपी एमएसपी इज लीगली एनफोर्सेबल फॉर ऑल क्रॉप्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज करेक्ट क्वेश्चन ऑन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द सीएससीपी व्हाट इज हम ऑलरेडी डिस्कस करिछि
कौन हम एटा समस्त टिके कहबा चेष्टा करी प्रीति प्रणाम हाउ आर यू ऑल समस्त केमती अछन ओनली वन एनीवन एल्स आउ कहीं ओनली वन आउ कहीं देखिए वन कौन दीजिए ये कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय CSCP करेक्ट CSCP ही it is recommended by whom it is recommended by CSCP ठीक अछि MSP is legally enforceable for all crops now second point रे problem कौन गुड भल अच्छे अमित प्रीति मु भी भल अच्छी एथर समस्त मन देकी प्रिपेयर होन जेमते एग्जाम क्वालिफाई करिवे ठीक अछि हां कि नहीं लास्ट टाइम प्रीलिम्स पूर्व जते जण थिले YT क्लास रे प्रीलिम्स पूर्व जते जण थिले लास्ट ईयर रे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे क्वालिफाइड प्रीलिम्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि समस्त प्रीलिम्स क्वालिफाई करि गले मेंस भी बोधे रिजल्ट आसीबो तांकर आसिला पर देखिबा कोन हो सो YT क्लास रो बहुत जण स्टूडेंट क्वालिफाई करते खुशी लागु छी हां कि नहीं ओ नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा तर ये सेकंड पॉइंट रे भूल कोन अछि मते कोन सेकंड पॉइंट रे प्रॉब्लम कोन भूल कोन अछि सेकंड रे ये जो लिखला ऑल क्रॉप्स एथ पई भूल हे गला या तो एथ पई तो ऑल क्रॉप्स लिखिबा कारण एटा भूल हे गला ताले व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज A one only A one only second next question statement 1 agriculture is the largest source of employment in India the share of agriculture in India's GDP is greater than service sector which is or are correct which is or are correct समस्त करिए लीगली नुहे ऑल क्रॉप्स करेक्ट प्रीति करेक्ट सस्मिता करेक्ट 23 এটা बहुत इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन किछि भी नहीं समस्त ठीक करि परिबे एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यस और नो केते परसेंट थिला एटा कि मन पके परिबे टिके केते परसेंट 55% केते 55% हां कि नहीं सेकंड यार जीडीपी को शेयर केते थिला अप्रोक्सीमेटली 16% अप्रोक्सीमेटली 16% तो ये कहूँ एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूशन टा कोन सर्विस तो अधिक एग्रीकल्चर सेक्टर रो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन टा कोन सर्विस तो अधिक नो हां कि नहीं ताले सेकंड ऑप्शन ट्रू और फॉल्स ताले कोन होबो एबे को आंसर एबे आंसर कोन समस्त कहि परिबे 1 और 2 1 और 2 so only one correct only one consider following statements Rashtriya Krishi Vikas Yojana focuses exclusively on rice and wheat the scheme provides flexibility and autonomy to states regarding agricultural planning which is correct which is correct टिके भाभी कहले एटा ठीक हो
ये कौन चाहते हैं प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली ऑन राइस एंड व्हीट यही जो टर्म गुड़ा था ना दीज आर वेरी डेंजरस स्टफ एक्सक्लूसिवली ऑल है ना ये सब गुड़ा हाँ एग्रीकल्चर मीन सब होलिस्टिक डेवलपमेंट ऊपर ये फोकस कर फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये टर्म गुड़ा को सब ध्यान दौथे सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना covers pre-sowing and post-harvest loss due to natural calamities. Natural calamity पे pre-sowing मंजी बुनिबा पूर्वरु post-harvest अमल हबा परे all farmers are automatically enrolled under this scheme. या गोटे इजी क्वेश्चन समस्त कहि परिबे किछि नै प्रॉब्लम pre-sowing मंजी बुनिबा पूर्वरु post-harvest means कोन अमल परे all farmers are automatically included or they have to pay some कौन कहते सेटा प्रीमियम they are automatically included or they have to pay some premium payment is required ठीक है only one next Kisan credit card scheme KCC scheme provides short term loan to crop production only cooperative banks and scheduled commercial banks they are important sources of institutional credit to agriculture एटा भी करि परिबे समस्ते is it a short term loan is KCC a short term loan no this is not a short term loan and not only for crop production agricultural operation KCC is for agricultural or agro operation first option is wrong second question is about the formal sources important sources of institutional credit कौन कहली cooperative banks scheduled commercial banks they are important sources of institutional credit कौन अब yes important source की नहीं yes they are so two only Food Corporation of India FCI is responsible for procurement, storage and distribution of food grains. FCI रा ना समस्त सुने FCI रे गोटे एग्जाम हुए SSC CGL टाइप ऑफ एग्जाम SSC कंडक्ट करे FCI बहुत स्टूडेंट अछन FCI रे जो माने काम भी करछन Statement 2 FCI determines MSP for crops annually which is correct now who determines MSP I already पढ़ी it is determined by CSEP now FCI is for storage and distribution FCI is for storage and distribution
बुझी ना बुझौनी क्वेश्चन लेवल ठीक अच्छी ना कष्ट लगुच मत लगुनि क्या कष्ट लगुव बोली मोर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास कौन बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन ये क्लास रो रिवीजन एग्जाम स्पेसिफिक बट टॉपिक स्पेसिफिक रिवीजन जस्ट टू रिमाइंड यू है जहाँ जहाँ पढ़ी आम पूर्व क्लास रिमाइंड करवा हूँ बेसिक ऑब्जेक्टिव नाउ agricultural subsidies in India they have led to overuse of groundwater and depletion of soil fertility. Such subsidies they are uniformly distributed across all states. पढ़ो क्वेश्चन सब तीन थर पढ़िए क्वेश्चन सब तीन थर पढ़िए ऑल ओनली ये वार्ड जो थी ये बहुत इंपोर्टेंट से भूल हवार संभावना अधिक थाए कौन कहते टाइप्स ऑफ वर्ड्स लाइक ऑल ओनली से ध्यान देवे कहीं भूल हमारा चांस से अधिक थाए are uniformly distributed across all states. Is it uniformly distributed? No, it is not uniformly distributed. So agricultural subsidies in India led to overuse of groundwater. Yes, subsidy dela daba द्वारा कौन होची से माने पंप सेट यूज करछन so there is overuse of groundwater. Soil fertility decrease होची there is depletion of soil fertility हाँ कि नहीं? Yes, there is decrease in soil fertility. There is decrease in soil fertility. बुझेला next. Indian agriculture is predominantly rain-fed with limited coverage under assured irrigation. Expansion of canal irrigation has surpassed well irrigations consistently. Now the question होची this question is mostly linked to geography रो question एटा economics रो question बोली एतेटा कहबानी अब ना कैनाल इरिगेशन टा कोठी देखिया को को टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है ना लैंडफॉर्म पढ़ी जियोग्राफी रो समझ लैंडफॉर्म पढ़ी कि नहीं जियोग्राफी रो लैंडफॉर्म केम थिला जियोग्राफी लैंडफॉर्म एटा तुमर थिला हिमालय एंती माने एटा शिवालिक नहीं कि शिवालिक पर एमती गोटे रिवर फ्लो करथिला रिवर फ्लो करथिला एटा कोन कहथिले एटा कहथिले भाबर मन अछि ना एटा कोन कहथिले भाबर बेल्ट भाबर पर नेक्स्ट आसला कोन तराई रीजन तराई नहीं तापर जो बेल्ट आसला एटी आसला कोन खादर आउ ये जो व्हाइट माली एटा कोन कहथिले एटा कहथिले खादर खादर पर आउ गोटे आसला तो कहथिले भांगर मन अछि कि मन नहीं ए भले पढ़थिले मते बर्तन को अच्छा एटा तो कला गोटे पॉइंट आ गोटे ऊपर हम देखले कोन हिमालय रहला हिमालय पर देयर इज ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन तापर रहला प्लेट्यू नहीं कि तापर एठी रहला कोन तुम ईस्ट कोस्ट एटा ला वेस्ट कोस्ट एटा ला कोन ईस्ट कोस्ट ए भले देखले ना इंडिया टा ए भले देखिया मिलथला हम यदि हम देखिया ताले एठी को रीजन ने ऑयल इरिगेशन टा अधिक हबो कोठी कैनाल इरिगेशन टा अधिक हबो कैनाल इरिगेशन मोस्टली कोठी पाइबा हमें ए रीजन गुडा करे कैनाल इरिगेशन पाइबा काहे कि ए रीजन में हमें कैनाल इरिगेशन पाइबा बिकॉज़ इट रिवर फ्लो करछि एटा को टाइप रो माटी अछि प्लेन एरिया अछि एवं एटी रिवर फ्लो करछि सेही कारण पई पाइबा एठी कोन पाउथले एठी कोठी पाउथले
एठी ओएल इरिगेशन इज कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन एठी मिलिवो सॉरी कैनाल इरिगेशन एठी किछि किछि मिलिवो एवं एई रीजन रे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन एठी मिलि परियो कैनाल इरिगेशन एवं आसाम प्लेन में मिलिवो रेस्ट जदि मु एई रीजन टा कहिबी प्लेट्यू रीजन एठी मिलिवो एठी ओएल इरिगेशन देखिया को मिले व्हाई ओएल इरिगेशन बिकॉज़ ऑफ द टोपोग्राफी दिस इज बिकॉज़ ऑफ द टोपोग्राफी इजंट इट या तो पढुथिलो ना ज्योग्राफी रे ताले एई पॉइंट टा को टिके देखंतु एक्सपेंशन ऑफ कैनाल इरिगेशन हैज सरपास्ड ओएल इरिगेशन कंसिस्टेंट कैनाल इरिगेशन ओएल इरिगेशन को सरपास करिछि कि बिकॉज़ एंटायर रीजन इज नॉट this is not completely which type of region it is not completely fertile land it is fertile land plain land nuhi so it has not surpassed बुझिला कि नहीं so it has not surpassed गोटे क्वेश्चन एउतरो खाली गोटे क्वेश्चन मते कहले डी या भीतर रिवर टा कोडी डिसअपियर कर जाउतला ए जो बेल्ट देखिले एटी भाबर तराई खादर भांगर या भीतर रिवर टा कोडी डिसअपियर कर जाउतला लास्ट गोटे क्वेश्चन खाली तापर आई विल कम बैक टू आवर टॉपिक रिवर टा एटी कोडी डिसअपियर करे और कोडी रीअपियर करे मस्कीटो कैपिटल ऑफ इंडिया को रीजन को कहा जाय या भीतर एंड व्हाई ई रीजन भीतर मस्कीटो कैपिटल ऑफ इंडिया कहा कहा जाय एवं काहे ओल्ड एलुवियम किए न्यू एलुवियम किए ओल्ड एलुवियम किए न्यू एलुवियम किए खादर और भांगर भीतर मोर फर्टाइल किए लेस फर्टाइल किए एती क्वेश्चन ना एती क्वेश्चन निजे करिवे निजे कहियो मते आंसर पर भाग रिवर कोडी डिसअपियर करे कोडी रीअपियर करे मस्कीटो कैपिटल ऑफ इंडिया 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन खादर भांगर भीतर अधिक फर्टाइल किए ओल्ड किए न्यू किए चलो ताले एटा बुझे गला ए क्वेश्चन ना बुझी पाले समस्त तो कैनाल इरिगेशन सरपास्ड ओएल इरिगेशन कंसिस्टेंटली नो हेनी काहे कि ना कैनाल कैन नॉट बी दे आर नॉट फाउंड स्पेशली इन द प्लेट्यू रीजन इंडिया रा सबुट अधिक ज्योग्राफिक फिजियोग्राफिक डिवीजन टा किए प्लेट्यू सबुट अधिक फिजियोग्राफिक डिवीजन टा किए प्लेट्यू सो प्लेट्यू एटा देखिया को मिलेनी and it is rainfed limited coverage under assured irrigation so one only answer कौन है answer is one only next consider following statements about agricultural marketing reform model agricultural produce and livestock marketing APLM Act 2017 it was intended to allow farmers to directly sell produce to private buyers without APMC restriction all states have adopted model APLM Act 2017 in full समस्त करि परिबे क्वेश्चन यस न्यू खादर भांगर बढ़िया बढ़िया वेरी गुड मस्कीटो कैपिटल टा तो कहले नि कि now again look into this keyword all only जोट थिबो you have to examine those statements very carefully point number 2 all achiti all states have adopted mosquito India's capital is Delhi mosquito capital is not Delhi mosquito capital कहा को कहा जाए भारत रे एंड काहे की कहा जाए को बेल्ट को से जो बेल्ट देखैथिले ना सेउटु कहबे भाबर तराई भांगर खादर या भीतर तराई रीजन टा को कहा जाए मस्कीटो कैपिटल तराई काहे कि ना एटा इति स्वाम्पी रीजन देखिया रिवर्स रिअपियर इति स्वाम्पी रीजन देखिया but tarai belt ecological sensitivity is more nowadays forest there is deforestation degradation of forest because of more and more number of human settlements so tarai region is on the way of degradation on the verge of degradation human settlement बढ़ुची
नहीं एटा को मस्किटो कैपिटल बोली कह जाए मलेरिया कैपिटल बोली कह जाए बहुत मलेरिया हुए ए रीजन तो ज्योग्राफी पढ़िला वाले इकोनॉमिक सोसाइटी सोशियोलॉजी सब मिसई की पढ़े दिस इज नॉट आइसोलेटेड सब्जेक्ट ठीक अच्छे सो ये देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट all state अच्छी again second point is wrong all state पाई so only first state is correct है only first statement is correct now जो APMC restriction देखो एटा कौन कहला APMC restriction now एटा एमती थिला फार्मर आमे कौन मार्केट रु किणुचे ना प्रोडक्ट गुडा जो जिनस सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कोड किणुचे तो मार्केट रु किणुचे एग्रो प्रोड्यूसेस मार्केट रु किणुचे हो कि नहीं सो इट थिला फार्मर डायरेक्टली इके सेलर को बिक्री करि परिबोनी सेलर को बिक्री करि परिबोनी फार्मर डायरेक्टली सेलर को बिक्री करि परिबोनी मझिरे आसला कि ना एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस मार्केटिंग कमिशन फार्मर दब क्या ना एमान को बिक्री करिवो एमाने सेलर को बिक्री करिवो एमाने कोन करिवो ना गोटे ऑक्शन हुए दैनिक प्रत्येक प्रोडक्ट रो गोटे ऑक्शन करिवे एमाने डेली ऑक्शन हो एतिकी टंका रे बिक्री धर पिजुली पिजुली किलो 50 60 70 ऑक्शन हो ऑक्शन हैला परे एपीएमसी रो एमान आनिवे एपीएमसी रो काम कोन ना ये गोटे कमिशन एजेंट ये कमिशन काटी दो इंडिया भीतर 8 to 10% पर्यंत कमिशन चलता है 7.5 to 10% पर्यंत कमिशन चलता है एपीएमसी बुझियला तो ये कहछि एपीएमसी इज द मिडिल मैन ना एठी डायरेक्ट कहीं फार्मर बिकी पर नथला सेलर को ना बिकॉज सेलर ताको एक्सप्लोर कर दे पारे बहुत कम टंका फार्मर टू प्रोडक्ट किनी दे पारे एवं अधिक टंका बिक्री करि पारे बुझियो कि नहीं धर तुम मु गोटे फार्मर जे चाष करछि कोन लेट्स से एप्पल प्रोडक्शन होछि नो एप्पल प्रोडक्शन टा मु नै कि काहा को देबी जदी डायरेक्ट दुकान को दे देली सी मोटू कम रे किनिवो 50 टंका केजी बिक्री करिवो 300 टंका बट एपीएमसी को देले कोन ना एठी ऑक्शन हो मार्केट प्राइस जा जिवो से अनुसार डिसाइड हो तो एपीएमसी रो काम होला मो प्रोड्यूसर्स टाको से मार्केट रे बिक्री करे दबो मु जदी फार्मर बिक्री करला पर मते मो प्राप्यटा दे दो मते मो रिटर्न कर दो तार 7% 8% कमिशन काट बुझियला सो एपीएमसी ए जो एक्ट आसिला याला एपीएलएम एक्ट लाइव स्टॉक मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 ये कहला कि इट विल अलाउ द फार्मर्स टू डायरेक्टली सेल टू द प्राइवेट बायर्स विदाउट एपीएमसी रेस्ट्रिक्शन विदाउट एपीएमसी रेस्ट्रिक्शन ने ये डायरेक्टली कहा को सेल कर परिवो ना मार्केट रे सेलर को सेल कर परिवो बोली अलाउ कर दला कहीं ना जो फार्मर मान रिचेबिलिटी अच्छी जो मान पाखे पैसा अच्छी से माने अलाउ बुझिला इज दिस क्लियर जो मान रिचेबिलिटी अच्छी चिन्हा जना अच्छी से माने दे परिवो से डायरेक्टली बिक्री करि परिवो if they are having more profit next the use of genetically modified crops ba ja kodi gm crops in India is regulated by genetic engineering appraisal committee bt cotton is the only genetically modified crop that is commercially cultivated in India बहुत important question देखो मोर ऑब्जेक्टिव नुहे तुम क्वेश्चन करवा मोर ऑब्जेक्टिव होउची क्वेश्चन माध्यम रे किछि कांसेप्ट बुझेवा बुझेला कि नहीं मो ऑब्जेक्टिव होउची क्वेश्चन माध्यम रे किछि कांसेप्ट बुझेवा एंड आई एक्सपेक्ट कि समस्त किछि ना किछि कांसेप्ट बुझुचन हां कि नहीं बुझा पड़ुची किछि ना किछि कांसेप्ट कांसेप्ट बुझी होउची अरुंधति बोथ अमित सी बोथ ओके yes absolutely correct so bt cotton is the only crop please remember this very important point bt cotton is the only genetically modified crop which is commercially cultivated in India ताबे ताऊ किछि not allowed now what is the problem with these gm crops genetically modified crops सहित problem कोन gm crops सहित problem कोन कि तापर sufficient research and development नाही most important point
इंडिजिनस क्रॉप वैरायटी नष्ट हो जाई पारे इंडिजिनस क्रॉप वैरायटी कौन कहली एटी नष्ट हो जाई पारे हां कि नहीं आउ कौन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रो अदर कंट्री माने से माने दे आर प्रोड्यूसिंग बट दे आर एक्सपोर्टिंग टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज बट दे आर नॉट यूजिंग देमसेल्फ तांका कंट्री ताको यूज करा निजे निजे ताको यूज करूना so genetically modified only crop whose na bt cotton in India and this is also correct there is a committee appraisal committee genetic engineering appraisal committee है ना yes ecosystem disruption may occur very good point kalpana एमती पर it may become uncontrollable technology ये गोटे uncontrollable technology ही पारे हां कि नहीं कौन कहली ये गोटे uncontrollable technology ही पारे next the farm mechanization rate in India is much lower than that of developed economies access to farm machinery is independent of farm size and capital availability which is correct ये क्वेश्चन आंसर भी समझते देवे भल मन देखिए देखो बहुत सहज क्वेश्चन किसी ना क्वेश्चन मन देखिए देखो ठीक हो क्वेश्चन ध्यान देखिए देखो ठीक हो CB1 अमित कल्पना सस्मिता देख फार्म मेकानाइजेशन यार अर्थ होची मशीन गुडा को यूज करिया मेकानाइजेशन माने यूज ऑफ मशीन्स use of machine is lower than that of developed countries now this is a very generic statement and everyone knows it will be correct nahi eta thik ache second point access to farm machinery it is independent of farm size and capital availability now farm machinery farm machine use kariba what are the machines like maybe tractor cultivator power tiller harvester ye sab now is it independent of farm size is it independent of capital availability now capital availability means big farmer big land or big farm so more capital availability and hence more access to machines can it be independent second point देखो can it be independent समस्ते कौन कहबे ना it cannot be independent बुझियला it is dependent first option correct second option is wrong first option is correct second option is wrong बुझियला agricultural export related question and India is among the top 5 global exporters of rice agricultural export growth in India is hampered mainly by stringent quality and phytosanitary regulations abroad ठीक है ध्यान देके पढ़ा है क्वेश्चन प्रथम तापर both अमित both माने बुझियो
Top 5 global exporters of rice or not? Yes, top 5 global exporters of rice. Now Indian rice, especially basmati rice, basmati rice टा कोड मिले? basmati rice टा को देश में मिले किए कोई परिवे? इंडिया रे मिले, आउ कोड मिले? नॉन बासमती राइस, नॉन बासमती राइस एटा मध्ये जाए बहुत एक्सपोर्ट हुए. सो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 पर बहुत अधिक एक्सपोर्ट हुए इंडिया, बोथ बासमती राइस एंड नॉन बासमती राइस. साउदी अरेबिया, ईरान ना. नाउ ज्योग्राफी कौन? बासमती राइस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड इट इज famous because of its good aroma and elongation. Aroma means smell पाई, elongation means लंबा चावल. ये दिला तो एटा ना ज्योग्राफी स्पेसिफिक. दिस इज ज्योग्राफी स्पेसिफिक. तो एटा कोड हमको देखिया को माने इट इज फाउंड इन हिमालयन जोन. केवल हिमालयन रीजन में देखिया को मिलता है. हिमालय टा कोडी अछि? इंडिया रे एवं पाकिस्तान में. इंडिया और पाकिस्तान एटा हमको देखिया को बासमती राइस हो आ कोडी न मन रहिला. सो खाली ए प्रोडक्ट नुहे, या व्यतीत अदर प्रोडक्ट अदर राइस मानक मध्ये इंडिया एक्सपोर्ट करथे टू अदर कंट्रीज. लाइक तुमरो मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट होची, यूके को एक्सपोर्ट होची, यूएसए को एक्सपोर्ट होची. तुम क्वेश्चन करो सर यूएसए यूके को काई एक्सपोर्ट होची चावल? सेमान तो चावल खांतिनी. सेमान कोन खांती? व्हीट खांती, जो गहम जातीय जिनस खांती. सेमान री एक्सपोर्ट करंती अफ्रीकन कंट्री गुडा सेति पई. हैला. So top 5 exporter भीतर इंडिया जाउची. नाउ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैम्पर्ड बाय स्ट्रिंजेंट क्वालिटी एंड फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस. फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन माने जो पोको फोको गुडा को बाहरी. फाइटो तुम गोटे प्रोडक्ट पठेइछ, धर ग्रेप्स पठेइछ, यूटू यूएई पठेइछ, एप्पल पठेइछ. नाउ दैट शुड बी वेरी मच फाइन ट्यून, फाइन प्रोडक्ट पठेइबा दरकार. हैला, पूरा बेस्ट क्वालिटी पठेइबा दरकार. तो फाइटो सैनिटरी तो एक्सपोर्ट हुए तो गोटे डॉक्यूमेंट भी दरकार हुए, ताको फाइटो सैनिटरी डॉक्यूमेंट कहते. सो सैनिटेशन हेची कि नहीं, फाइटो सैनिटेशन हेची कि नहीं ताको मध्ये देखा जाए. दैट इज कॉल्ड फाइटो सैनिटरी रेगुलेशन. बुझिला? ताले टी कोन हो? व्हाट इज द आंसर? द आंसर कोन हो? बोथ. बोथ आर करेक्ट. बुझिला ना नहीं? यदि डाउट अछि को क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एग्रीकल्चर ऊपर अनेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कले आ दि चारटा बाहर क्वेश्चन को आसीबा टिके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल रूट ऑफ क्रेडिट इन फाइनेंशियल सेक्टर? इनफॉर्मल रूट, नॉट ऑफ फॉर्मल रूट. समस्त कहि परिबा. मनी लेंडर गेस कोन करियो तो ठीक तो हो. ठीक अछि, समस्त करि परतन. कष्ट लागुची काहाको? क्वेश्चन कष्ट लागुची ना रिफ्रेश हो जाउची, मने पडुची पाठ ना मने पडुनी? कोन प्रॉब्लम होची? एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विथ दिस क्वेश्चन? भल लागुची? बुझा पडुची जिंस? जहाँ जहाँ पढ़ी थिले क्लास रे मे बी वन शॉट सीरीज बा कोटी सो रिवाइज हो जाउची. यार ऑब्जेक्टिव होची जस्ट टू रिफ्रेश. इकोनॉमिक्स रे जीरो जमा नहीं, क्लास पर जीरो नहीं. हमें तो क्लास कले ना, तापर जीरो रखले केमते हो? बुझा पडुची, भल लागुची. ठीक है, बढ़िया. डिफिकल्ट लेवल हाई रे भी क्वेश्चन अच्छी, बट हाई डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन देले ना प्रॉब्लम हो, सेतपई दोनी. सो इजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन देछि एंड मोस्टली ए टाइप रो क्वेश्चन आसे. चल आउ केतरा क्वेश्चन को आसी. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिलेटेड व्हिच इज ट्रू.
set up in 1950, government department, an advisory body, constitutional body. Which is correct? Correct. Which is correct? अमित वाईटी रे देखी वन शॉट वीडियो बहुत बढ़िया वन शॉट वीडियो रे बहुत जिनस कवर कराई एक्सटेंसिवली गुडा जिनस कवर कराई 1950 रे एस्टैब्लिश हेतिला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नो इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैला एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो वन करेक्ट माने टू एटा को कैंसिल मार दबा ए नल सी भीतर गोटे हो एटा गोटे एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडवाइजरी बॉडी हैला अभिजीत बैंकिंग सेक्टर केबे हो बैंकिंग सेक्टर आनिबा आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नेक्स्ट क्लास जो आसो पुणी आनी बैंकिंग आनी फाइनेंस जहाँ जहाँ टॉपिक अच्छे सब टॉपिक आनिबा सब टॉपिक डिस्कस करियो ऑल टॉपिक्स टू बी डिस्कस नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अमित किसी भी प्रॉब्लम होबनी बहुत टॉपिक कवर रही सो यू कैन रीड इट पढ़ी पारिबे पढ़ असुविधा हेले पचारिबो डाउट अछि डोंट वरी so this is all about globalization LPG model केबे आसिला globalization has two arms liberalization and privatization याको राव सिंह मॉडल बोली मध्य कहा जाए ए समय किए थिले फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ग्लोबलाइजेशन अर्थ रेस्ट्रिक्शन गुडा को रिमूव कर नेक्स्ट ईयर बीएड कट ऑफ हाई जीवो मु कहि परियन बीएड कट ऑफ ऊपर मोर नॉलेज नहीं जेतले हबो से क्लास जेतले होउची मोर एजुकेशन क्लास बा से बीएड परीक्षा रिलेटेड क्लास हो जेतले ना सेतले पचारियो मैम कहउछन कहि दे एटी ओसीएस रिलेटेड ओएस रिलेटेड जदी किछि क्वेरीज अछि पचारो ठीक अछि चलो सो इट इज ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन गुडा को हटेवा और रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शन कौन कहली रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस ओसीएस एग्जाम पई आशुतोष अक्टोबर रे हो अक्टोबर सेकंड वीक मोस्ट सेकंड संडे मोस्ट मेंस रिजल्ट आसी जीवो आ भीतर मेंस पर इंटरव्यू हो इंटरव्यू रो फाइनल रिजल्ट आसिला पर प्रीलिम्स हो बुझिउछ एटा हे गला केते अगस्त मिड हे गलानी आसी कि मिड क्रॉस करि गलानी तो अगस्त एंड सुधा आसिले सेप्टेम्बर रे करा जीवो तुमर इंटरव्यू सेप्टेम्बर वंस इंटरव्यू इज डन देन सरला पर अक्टोबर हो पुनी अक्टोबर फर्स्ट वीक भीतर फाइनल रिजल्ट सेकंड वीक रे प्रीलिम्स हैला चलो
Which of the following is our parameters for measurement of human development by UNDP? Definitely प्रीति आमे आनिबा आंसर राइटिंग ऊपर निश्चित भाव आनिबा कोर्स वीडियो अच्छी ऑलरेडी मु होची यू कैन गो थ्रू इट आंसर राइटिंग केमते लिखिबे व्हाट आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स सब कवर करके मु वीडियो रखी छी ऑलरेडी देखि परिबे वीडियो तेबे भी मेंस पूर्व पुणी आनिबा वीडियो चलो कौन कौन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एथरे तीनटा एचडीआई रे कौन थिला एचडीआई रे हमें देखुले हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेल्थ पाई नउतला हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाई नउतले पर कैपिटा इनकम कि नहीं आ गोटे नउतले एजुकेशन पाई एनरोलमेंट रेशियो कौन नउतले एनरोलमेंट रेशियो है एटा कौन एटा मु आंसर कहबिनी हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पीडब्ल्यू बैच जॉइन कला पर जानले अमित बहुत बढ़िया सो बहुत टॉपिक अच्छी बहुत सब्जेक्ट अच्छी सब पढ़ा होची पीडब्ल्यू रे सो देयर इज अ फुल कोर्स ऑन ओसीएस ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम पाई सेठी मु इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पढौची एथिक्स इंडियन सोसाइटी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज सब पढ़ा होची हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस टेक चलो इटा आंसर कले समस्ते नेक्स्ट India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to demographic dividend पाई इंडिया को यंगिस्तान बोली मध्य कुआ जाए कहीं ना यंग पॉपुलेशन इंडिया रे अधिक कौन कहली यंग पॉपुलेशन इंडिया रे अधिक ओडी ओएस एग्जाम इंग्लिश ना ओडिया रे भल हो इंग्लिश रे देले बेटर इंग्लिश रे देले बेटर अभिजीत मु अच्छी डोंट वरी अच्छी मु लास्ट क्लास टेलीग्राम चैनल हमर ओपीएससी वाला चैनल अछि ना सेठी डाउनलोड करि परियो आफ्टर द क्लास यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल फ्रॉम द ओपीएससी वाला चैनल टेलीग्राम चैनल ठीक है सो 15 टू 64 एज ब्रैकेट आ बेसी किछि डिस्कस करिवार नाही आ ऊपर नाउ नीति आयोग तो छोटो क्वेश्चन छोट छोट आउ दि तीनटा क्वेश्चन कर देन विल रैप अप ओके नीति आयोग स्टैंड्स फॉर जल्दी जल्दी कह देबे बहुत इजी क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस
नॉट बी बी नुहे डी अरे एटा ही भूल है डी है इकोनॉमिक सर्वे किए पब्लिश करते पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग कहा को रिप्लेस कले नीति आयोग रिप्लेस्ड यस ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग रिप्लेस कहा को कले रिप्लेस्ड प्लानिंग कमिशन करेक्ट नो एटा हे गला एटा भी इजी क्वेश्चन गला ना करंट फाइनेंस मिनिस्टर छाड़ चलो सेंसस ऊपर अच्छी डाटा अच्छा एटा को which of the following could assist economic growth in developing countries increasing the rate of taxation decreasing foreign investment decreasing in terms of trade and increasing the level of education बहुत easy question yes D and increase in the level of education है last question which sector of economy shows remarkable change in the last decade tertiary sector all like that ठीक अच्छे ताले बुझी गला एति की पढ़ी के आस ताले आ जा अच्छे हम देखिबा नेक्स्ट क्लास काली रो क्लास रे डिस्कस करिया कोन को इंडस्ट्री tomorrow session will have discussion on industry so aji hame dekhile mostly MCQs on कौन देख लेते हैं MCQs on agriculture ठीक है जी कौन देख लेते हैं MCQs on agriculture देखियो आ जा नेक्स्ट क्लास पढ़ी के आसंतो एथि लाइट ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू एवरीवन गुड नाइट थैंक यू